a global hope to save the environment. Sustainability is associated with technical processes, eco-theory and engineering. But what it really takes is a vision with values and commitment to make it possible. Indian Oil, India's flagship downstream oil and gas company, with a legacy of fueling the nation's growth for over 5 decades, is proud to be committed to environment conservation and ecological balance as integral to its business. With a corporate vision to be the energy of India and to become a globally admired company, living up to our core values of care, innovation, passion and trust, we join Honorable Prime Minister Modi's mission to reduce dependence on fossil fuels by 40% by 2030 and lower emission levels. To make this possible, Indian Oil constituted a renewable energy and sustainable development group at the corporate level to execute renewable and clean energy initiatives like carbon and water footprint, biofuel plantation, waste to fuel, retail outlet solarization, rainwater harvesting, solar and wind energy, tree plantation. To reduce our carbon footprint, we strive to make all our major events and seminars carbon neutral. Indian Oil has achieved 4.5% reduction of specific water footprint till 2015-16. We believe in reduce, reuse, recycle of resources and dispose water streams in an environmentally safe manner. We are proud to have implemented nearly 500 rainwater harvesting systems across 950 hectares. We aim to increase the installed capacity of grid-connected renewable solar energy from 80 megawatt to 260 megawatt over the next 5 years. Usage of grid power, diesel generators and overall energy cost got reduced, and over 3,64,700 solar lanterns were sold to replace kerosene lamps. 5,73,334 trees have been planted since 2012-13. We plan to replace all our existing light fixtures with LED lighting. The areas in which we invest in research to reduce the carbon footprint are yield maximization technologies, coal gasification or liquefaction technology, nanotechnology, petrochemicals and polymers, HCNG blends and hydrogen energy, biodiesel, ethanol blended petrol, gas to liquid technology. Since 2001, as signatory and member of the UN's Global Compact, we promote clean energy and sustained development in the daily lives of our customers, helping them live better. Indian Oil, bringing energy to life.
There was a flash fire at tank truck loading gantry at one of the bottling plants in which the driver of bulk TT suffered burn injury and subsequently succumbed to the said injuries. Another driver also sustained minor burn injuries during the incident. This is how sequence of events unfolded. On the date of incident in the morning shift, 6 numbers of bulk tankers were taken inside the plant after due physical checking of the tankers and verification of the documents by the officer assigned to look after bulk loading. The tankers were taken for loading operation. Another 6 numbers of tankers were also physically checked and documents were verified for arranging the next batch of loading operation. The subject bulk tank truck in which the flash fire took place was at bay number 5. The operator assigned to bulk loading section advised the driver at bay number 5 that the loading operation of the said bulk tank truck have been completed and that he has closed the manifold valve of the bulk tank truck as well as the isolation valve of the loading arm. He also instructed the driver to wait there and proceeded to bay number 2 for some other job. Around this time, the driver of the bulk tank truck at bay number 5 decoupled the loading arm in spite of the absence of the operator when the flash fire took place, in which the driver was engulfed and sustained severe burn injury. The rear wheels of the bulk tank truck also caught fire during the incident. Meanwhile, the driver of another bulk tank truck rushed to extend help to the tank truck driver at bay 5 and managed to remove his clothes that were on fire. In the process, this driver too sustained minor burn injury. The drivers were immediately rushed to the hospital. The driver at bay 5, who sustained about 70% burn injury and sustained to death after 11 days during treatment. These are few critical observations of the incident. The loading arms deployed at the bulk tank truck loading bays have quick release couplings which connects via specially made flange attachment with the bulk tank trucks. As per the design, the coupling has an interlock to prevent liquid flow out of the arm content even if the said content has not been flared off. In normal circumstances, during decoupling of loading arm, the internal plunger is supposed to go back on the polyurethane seat so as to close the flow of the LPG completely so that decoupling from the tanker flange can take place safely. The main reason of the LPG leakage of loading arm content only was the failure of the said interlock of the coupling. It appears that LPG gushed out with high velocity under the operating pressure and the same resulted in recoil of the loading arm and or the coupling. Due to this recoil of the loading arm and or the coupling, it might have collided with the adjoining structure, resulting in a source of ignition, creating the flash fire with the leaking LPG pool, creating enough vapor to produce a combustible mixture in the open. Various causes of the incidents were: as per the standard operating procedure SOP, the loading arm must be depressurized to remove the residual LPG content by cold flaring after completion of every loading operation. This step of SOP was not followed. This, coupled with the failure of the interlock of the quick release coupling, the arm content of LPG leaked in open. The consequent recoil of the arm or coupling caused metal-to-metal contact with the structure and created spark that led to flash fire. The operation was done by a driver instead of plant operator, which was a deviation of SOP. Various lessons that can be learned from this incident are: the SOP must be followed. That is,
the cold flaring of LPG from the metallic arm before decoupling of the loading arm from the tank truck. The decoupling operation shall be done by the trained manpower assigned for the job. Periodic maintenance of couplings should be undertaken. The bulk tank truck loading of LPG is a critical activity. The work needs to be supervised by capable, technically qualified, dedicated officer so that such violation of SOP does not recur. One unfortunate morning in one of the Indian Oil refineries, a fatal accident occurred at the ISOM unit while doing preventive maintenance job on air fin fan of naphtha splitter column. This is how the sequence of events took place. One of the air fin fan cooler motor of naphtha splitter column was having the problem of motor not stopping from local stop push button switch. This problem was discussed by production department with electrical maintenance group in the morning zonal maintenance meeting. Accordingly, electrical de-energization clearance was given and the motor was de-energized from substation for carrying out maintenance job of local push button switch by electrical maintenance group. Later, the shift in charge of ISOM unit also discussed with mechanical maintenance group and decided to carry out mechanical preventive maintenance job of the same air fin cooler fan. Clearance was issued to mechanical maintenance group to carry out the mechanical preventive maintenance job of the same air fin cooler fan. At about 12:15 hours after the completion of push button switch repair job, electrical maintenance personnel approached to electrical operation of substation for energization of the air fin cooler fan to check the functioning of stop push button. Accordingly, after receiving the written request from electrical maintenance, energization of air fin cooler fan motor was done from substation. The incident happened after energization of the motor and switching on VFD panel as well. Probably the local switch on-off panel was left in auto mode. Therefore, the fan suddenly started moving while one person of mechanical maintenance group was already carrying out preventive maintenance job at same air fin cooler fan with valid clearance from production department. The person was injured badly. He was immediately taken to the hospital for treatment. Unfortunately, he succumbed to injuries. These are the causes of this incident. Although two separate maintenance groups were working under electrical maintenance and mechanical maintenance for the same equipment, there was no coordination among the two. Electrical maintenance attended the repair job of local stop push button switch of air fin cooler fan and left the site at around 11:45 hours. Electrical maintenance informed electrical operation for energization from substation. The fan was energized from substation without checking the site where mechanical maintenance reached for carrying out preventive maintenance after electrical maintenance team had left the site. Mechanical maintenance was also probably not informed about electrical job being carried out in the same air fin cooler fan. As per the prevalent practice, trial run or testing of any equipment is done from field only. In this case, instead of starting the motor from field, it was started from substation. Electrical maintenance did not check at site whether anybody is working on fin fan before taking trial. The accident occurred as the air fin cooler fan motor was started
while preventive maintenance job was being carried out by mechanical maintenance group. Lessons learned from this incident are: while more than one agency is working on same equipment, foolproof Lotus system, lockout and tagout should be strictly followed. Present practice of entering into the cage of air fin cooler fan for doing preventive maintenance job to be stopped. Cage to be removed before starting any maintenance activity. At present, the motor can only be started if the VFD is in bypass mode through the start push button provided in VFD panel. Electrical maintenance to review the electrical circuit so that motor can be started from field only. Training should be imparted to electrical maintenance and operations group on VFD control system, which is integrated with DCS in process control. And implementation of work permit system as per OISD standard 105 for respective jobs inside refinery needs to be strengthened further. One evening, an exhumed empty tank of 5 KL capacity kept on IOCL open land near a village exploded and one of its end plate blew in the air. The blown end plate fell around 150 meters away from the site of the explosion on the adjacent slum area and hit 2 girls aged 11 and 13 years who were playing in the ground. One girl died on the spot, whereas the second girl succumbed to her injury on the way to the hospital. This land was procured by IOCL for construction of residential colony. However, the residential colony was not constructed and this open land was being used for storing exhumed or dismantled old tanks of 15 and 20 KL capacity taken out from retail outlets and consumer pumps. The subject tank was brought at the open land the day before. Main observations of this incident have been that the open land is surrounded by a gate and boundary wall, which is broken at places. The exhumed tanks are stored in a haphazard manner. Round-the-clock security is placed at the gate, but there is no control on unauthorized entry on the backside slum dwellers in the land. The exploded tank was previously in MS service at a retail outlet. It had no manhole with 3 nozzles only on its body. The subject land premises is used as easing ground for answering nature's call by the slum dwellers. Signs of bidi, cigarettes, beer cans, scattered playing cards with signs of burnt vegetation were found at the site. Work permit for exhuming the tank was not issued to the contractor. The exploded tank was not degassed properly. However, the appendix of work order issued to Capex contractors clearly stipulates degassing of exhumed tanks before bringing them to the subject land. Little amount of sludge was also found inside the exploded tank at the time of inspection. Let us now review the causes of the accident. The exploded tank was not apparently degassed properly and the premises was being used by the slum dwellers as an easing ground for answering nature's call. It is suspected that someone smoking and passing by must have provided the source of ignition to the hydrocarbon-rich atmosphere around the said tanks, and the hydrocarbon vapors trapped inside the exhumed tank got a flashback and exploded. The exhumed tank had no manhole, because of which it was a technical difficulty in degassing and desludging the exhumed tank.
Not following the work permit system for exhuming of tank at retail outlet were also the contributory factors. Here are few points that we need to take care of to avoid any such accident in future. Proper degassing of exhumed tanks to be done. Work permit system for exhuming of tank from earth pit at retail outlet or consumer pump to be followed. Security to ensure prevention of unauthorized entry in IOCL land used for storing of exhumed tanks. At about 13:20 hours on 28 September 2012, an incident took place at one of the tank farm of IOCL refineries. During the incident, 4 contact personnel received severe burn injuries due to flash fire caused by sudden rupture of a 20-inch diameter HSD line passing nearby the tank farm area. All the injured persons were immediately shifted to hospital after initial first aid treatment at Refinery Occupational Health Center. 3 of them later succumbed to their injuries. This is how the incident took place. A fire occurred at around 13:20 hours when HSD was being transferred through 20-inch diameter diesel line from F2 pump house to tank number 102. As per the eyewitness accounts, heavy vibration coupled with hammering sound was observed prior to the rupture of the pipeline. During the pumping operation, the subject 20-inch diameter diesel line ruptured and diesel from approximately 15-inch fish mount opening spread in the nearby area. The product jet from the ruptured portion of the pipeline was observed to have engulfed up to the radius of about 50 meters. This spray of hydrocarbon liquid from the pipeline found ignition source inside tank 706, located at a distance of about 45 meters from the rupture pipeline location, where hot work activities related to M&I of the tank were in progress at the time of incident. The spray of HSD fell directly upon the contract employees working inside the tank. This resulted in flash fire inside the tank, wherein 4 contract persons received severe burn injuries. They were immediately shifted to first aid treatment at Refinery Occupational Health Center and then to City Hospital, where 3 succumbed to their injuries on 1st and 3rd October 2012. The fire was put out at 13:30 hours after isolating the leaky line. Probable causes of accident can be: the subject pipeline was recommended for replacement about a year back by inspection department of the refinery, but till date of the incident only partial replacements could be carried out. The section where rupture had occurred was not taken up for replacement. As per the eyewitness accounts, there was heavy vibration in the line coupled with knocking sound prior to its rupture. Foundation of concrete sleeper for supporting the 20-inch diameter pipeline section near the ruptured location has developed cracks. This indicates that the rupture of pipeline has taken place because of huge pressure surge in the external corroded pipeline due to sudden start or stop operation of pump or sudden valve operation that led to failure of the corroded pipeline. Lessons that can be learnt from this incident are: severe external corrosion and deep pitting on the pipeline has led to substantial thickness reduction of the pipeline section, which ultimately resulted in failure. With such condition, the pipeline should not have been operated upon or should have been derated
till the replacement was undertaken. Pipeline with such severe external corrosion should not be operated without implementing critical recommendation. The entire pipeline section should have been replaced as recommended by Inspection Department during the recently concluded shutdown of the refinery. आशा की धूप सुनहरी फिर है निकला दिन नया, है मुस्काता चेहरा हर नारी का, क्या है राज करे बयां। यूं तो सुबह पहले भी आई पर तब बात नहीं थी ऐसी, हर घर के चौकी रसोई की थी यही दुख भरी जुबान। मिट्टी के चूल्हों से उठते राख धुएं के गुबार, दिन ब दिन घुटता ही रहता था हर गृहिणी का संसार। तब एक सहेली पहुंची दर दर, क्रांति के लिए मशाल, दीदी नई आजादी हर घर, जला के खुशियों की जोत। जब से आई तू जीवन में, मेरे गृहस्थी का तू प्राण है, मेरी खुशियाँ तेरे नाम है। इंदेन तू महान है, इंदेन तू महान है, इंदेन तू महान है। सन 1965 की छोटी सी शुरुआत के बाद से और इसकी उपयोगिता पर लोगों को प्रारंभ में संदेह होने के बावजूद इंडेन एलपीजी को पूरे भारतीय उपमहाद्वीप में एक रसोई क्रांति निर्माण करने का श्रेय जाता है। Beginning was very tough because there were no takers for this product, but knowing instinctively people could feel that this is the future. My mother-in-law used to cook on the coal fire. I never even knew and never learned how to use the coal fire. To me, it was the biggest blessing in my life. पूरी लगन, नए विचारों, उत्साह और भरोसे के साथ आगे बढ़ते हुए इंडेन ने देश के लिए सुरक्षित, भरोसेमंद और सुविधाजनक ईंधन की जरूरतों को पूरा किया। हमारे रसोई घरों को साफ, स्वच्छ और सुरक्षित बनाए रखा। सुरक्षित ईंधन से वंचित जनता तक पहुंचते हुए ईंधन की आपूर्ति देश भर के शहरों, गांवों और दूर दराज के इलाकों तक की जाती है। लेह में दुनिया के सबसे अधिक ऊंचाई पर एलपीजी बॉटलिंग प्लांट की स्थापना करते हुए और पूरे देश में 91 बॉटलिंग प्लांट्स के साथ इंडियन ऑयल अपनी 10 रिफाइनरीज के जरिए देश के सभी क्षेत्रों में एलपीजी आपूर्ति करता है। पूरे भारत में लगातार सप्लाई चेन की स्थापना कर उसे कायम रखते हुए इंडेन कई परीक्षणों में सफल रहा है और अपने ग्राहकों का भरोसा हासिल किया है। भारत के अग्रणी एलपीजी ब्रांड के रूप में इंडेन के 46 एरिया ऑफिस इसके 8000 डिस्ट्रीब्यूटर्स को रोजाना 18 लाख इंडेन एलपीजी सिलेंडर यानी प्रतिवर्ष 60 करोड़ सिलेंडर्स आपूर्ति करने के अथक प्रयासों में मदद करते हैं। कश्मीर से लेकर अंडमान, राजस्थान से लेकर मिजोरम तक, रेगिस्तान से लेकर देश के नदियों और नहरों से भरे इलाके, इंडेन एलपीजी के लिए ग्राहक की सुविधा ही सर्वोपरि है।
अभूतपूर्व विकास से इंडेन ने 12,000 से लगभग 9 करोड़ ग्राहकों के दिलों को जीता है। डिजिटल इंडिया के इस दौर में इंडेन ने वेब और मोबाइल एप्लीकेशन विकसित कर सिलेंडर और रीफिल की बुकिंग और ट्रैकिंग की सुविधा प्रदान की है, यानी घर बैठे हर जरूरत की पूर्ति। हमारे साथ जीवन भर का रिश्ता बनाते हुए इंडेन अपने 50 वर्ष पूरे कर रहा है और ये देश की गृहिणियों का सबसे भरोसेमंद साथी है। आज भारत में हर दूसरा एलपीजी कुकिंग गैस कनेक्शन इंडेन है। खुशहाल परिवार यानी इंडेन परिवार। जब से आई तू जीवन में मेरी गृहस्थी का तू प्राण है, मेरी खुशियाँ तेरे नाम है। इंडेन तू महान है, इंडेन तू महान है, इंडेन तू महान है। पीढ़ियों से अब यही परंपरा, खुशियों में ऊर्जा पिरोती। आओ मिलकर हम सब मनाएं इन रिश्तों की स्वर्ण जयंती। इंडेन तू महान है, इंडेन तू महान है, इंडेन तू महान है। The use of high temperatures is inevitable in metalworking industries for heating hard surfaces, welding and cutting of metals. The conventional practice of metal cutting using acetylene with oxygen, no doubt, creates a high flame temperature, but can also be extremely hazardous as it can explode during use, storage and handling. A safer and more economical alternative for metal cutting is the use of oxygen with liquefied petroleum gas, LPG. However, until recently, LPG could not provide the high flame temperatures required. Indian Oil, the top-ranking Indian company in the Fortune Global 500 list and the nation's flagship energy company, has developed a special grade of LPG for high flame temperature applications called Indane NanoCut. High-therm metal cutting gas with the cutting edge of nanotechnology. Indane NanoCut is a made-in-India achievement of Indian Oil's R&D Center, developed through advanced research in nanotechnology, creating a proprietary additive to multiply the temperature efficiency of LPG. Indane NanoCut provides a thermal efficiency much higher than that of normal LPG or other LPG-based products. After extensive field trials and testing by various laboratories, Indane NanoCut has proven its superior performance. Toxicology studies have been conducted at globally accredited laboratories of Intertech USA, and Indane NanoCut has been certified as non-toxic and safe for use. It is operator-friendly and enhances the health, safety and environment at the workplace. Indane NanoCut is ideally suited for applications like metal cutting, heating, straightening, hardening, welding, soldering, brazing and coating. Indane NanoCut is safer than oxyacetylene gas, offering high flammability without any shock. It has unique qualities thanks to the cutting-edge attributes of nanotechnology. Faster and sharp cut, lower oxygen consumption, lower operating pressure, low glare flame, soot-free flame, reduced slag or wastage, lower torch nozzle maintenance, economical and easily available, easy transportation and storage. Indane NanoCut provides lower gas consumption, quicker preheat time, excellent cut surface finish, faster penetration, faster keyhole formation, faster cutting, narrow kerf width,
and efficient cutting of all thicknesses of metals. Indane NanoCut is suitable for both automated CNC cutting systems and manual handheld torch equipment, and has proven compatibility with all industrial gas cutting systems which use metal, rubber or plastic components. No need to add, modify or change existing equipment or torch. Today, Indane NanoCut is fast becoming the preferred choice for the ship-breaking industry, where massive cutting operations are required. Indane NanoCut is suitable for cutting of carbon steel, low, medium and high alloy steel plates, ingots, billets and blooms. It is also used for flame hardening and other industrial heating applications. Indane NanoCut offers substantial savings of up to 30% in metal cutting over conventional LPG-based fuels. Indane NanoCut is easily available from Indian Oil's LPG bottling plants pan-India and delivered right to the customer's doorstep through intelligent logistics deployed by more than 8,000 Indane distributors nationwide. Recently, Indane NanoCut was conferred the 8th Bengaluru India Nano Innovation Award and the coveted PetroFed Award 2015 in the category Innovator of the Year, Team. When metal cutting demands efficiency with safety and economy, Indane NanoCut is the ideal solution. Indane NanoCut, high-therm metal cutting gas with a cutting edge of nanotechnology from Indian Oil. India's largest supplier of fuel on land, air and sea. Indian Oil, moving you ahead. आज तुम्हारे हाथ के पराठों ने तो माँ की याद दिला दी। और लेकर आती हूँ। हमारा इरादा ये है कि अगर आप एक सिलेंडर छोड़ते हो तो मैं वो सिलेंडर उस घर को देना चाहता हूं जिसमें लकड़ी का चूल्हा है और जिसके कारण पॉल्यूशन होता है और जिसके कारण उनके बच्चों को धुएं में पलना पड़ता है और बीमारी का घर हो जाता है। ये अब आप फोन में क्या कर रहे हैं? अपनी एलपीजी सब्सिडी गिरअप कर रहा हूँ। अचानक क्यों? मैंने अपनी माँ को लकड़ियां चुनते हुए देखा है, मेरे लिए खाना बनाते हुए धुएं में अपनी आंखें जलाते हुए देखा है। मेरे गिव इट अप करने से उन कई माओं को गैस कनेक्शन मिलेगा जो आज भी लकड़ी के चूल्हे पर खाना बनाती है। आप भी अपनी सब्सिडी छोड़ने के लिए www.mylpg.in या www.givitup.in पर लॉग इन करें। पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी। नमस्कार दोस्तों, आइए आज आपको आपके किचन में जीवन सुरक्षा से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बातें बताएं। तो पहले हम आपको बताएंगे आपके परिवार की सुरक्षा के बारे में। घरेलू गैस इंस्टॉलेशन की सुरक्षा में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका एलपीजी होज की होती है और अपने ग्राहकों का यानी कि आपका ख्याल करते हुए इंडेन गैस परिवार सुरक्षा एलपीजी होज इस्तेमाल करने की सलाह देता है। आमतौर पर इस्तेमाल होने वाली हरी एलपीजी होज पर मौसम के बदलाव का असर होता है, जिसकी वजह से उसमें कम समय में ही दरारें पड़ती हैं और उससे गैस का रिसाव यानी लीकेज होने की संभावना रहती है। सुरक्षा एलपीजी होज पर मौसम के बदलाव का कोई असर नहीं होता है और वो रिसाव रोधक भी है क्योंकि उसकी 3 खास परत होती है। हरी एलपीजी होज ज्यादा गर्म होने से पिघल सकती है और उससे आग भी लग सकती है, जबकि सुरक्षा एलपीजी होज अग्निरोधक होने के कारण उस पर गर्मी का कोई भी असर नहीं होता है। हरी एलपीजी होज को चूहा आसानी से काट सकता है और उसमें छेद भी हो सकते हैं जिससे लीकेज हो सकती है। याद रहे, सबसे ज्यादा दुर्घटनाएं चूहे के काटने से ही हुई हैं।
लेकिन अपनी सुरक्षा होज में बिठाई गई होज स्टील की जाली की वजह से चूहा उसे काट नहीं सकता और इसलिए वो 100% सुरक्षित है। अपनी इन कमियों की वजह से हरी होज की आयु ज्यादा से ज्यादा 2 साल तक ही सीमित है, जबकि सुरक्षा होज अपने इन गुणों की वजह से 5 साल तक आराम से चल सकती है। अगर कीमत की बात सोचें तो हरी होज 10 पैसे प्रतिदिन पड़ती है और सुरक्षा होज 11 पैसे प्रतिदिन पड़ती है। क्या आप अपने परिवार की कीमत 1 पैसे से भी कम समझते हैं? नहीं ना? तो फिर सुरक्षा की खरीदारी में ही है समझदारी। अब हम घरेलू गैस इंस्टॉलेशन के सुरक्षित इस्तेमाल का तरीका सीखेंगे। गैस सिलेंडर जमीन पर ऐसी जगह पर रखें जहां आप आवश्यकता पड़ने पर आसानी से और जल्दी पहुंच सकें। सिलेंडर को फर्श की सतह से नीचे ना रखें। सिलेंडर को हमेशा सीधा रखें। अगर आप समझते हैं कि इसे लिटाकर रखने से आपको ज्यादा गैस मिलेगी तो ये आपकी गलतफहमी है। इतना ही नहीं, ऐसा करना खतरे से खाली नहीं है। सिलेंडर को धूप, बारिश तथा गर्मी से बचाकर हवादार क्षेत्र में रखें। सिलेंडर में लगा नायलॉन धागा सेफ्टी कैप से लगा रहने दें, जिसका इस्तेमाल वाल्व लीक होने पर तुरंत करें। यदि सिलेंडर उपयोग में नहीं है तो उसके वाल्व पर सेफ्टी कैप लगा रहने दें। सिलेंडर की मरम्मत करना गैस कंपनी का काम है। सिलेंडर के साथ खिलवाड़ मत कीजिए। कार्यालयीन समय, रविवार तथा छुट्टियों के दिन अपने वितरक या गैस कंपनियों द्वारा बनाए गए आपातकालीन सेवा कक्ष से संपर्क करें। गैस चूल्हे को सिलेंडर की ऊपरी सतह से भी ऊपर प्लेटफॉर्म पर रखें। गैस चूल्हे के आसपास की खिड़कियों पर पर्दे ना लगाएं। चूल्हे के बर्नर को हवा के झोंके से दूर रखें ताकि उससे जोत बुझकर गैस का रिसाव यानी लीकेज ना हो। किसी भी अवस्था में चूल्हे को फर्श पर ना रखें, ये बहुत खतरनाक साबित हो सकता है। खाना पकाते समय सूती वस्त्र या एप्रन पहने। बर्नर को जलाने हेतु पहले माचिस की तिल्ली जलाएं, फिर नॉब ऑन करें। अगर आप किचन में फैन का इस्तेमाल कर रहे हैं तो विशेष ध्यान रखें कि इसकी हवा से चूल्हा बुझ ना जाए। खाना बनाते समय हमेशा किचन में ही रहें ताकि आवश्यकता पड़ने पर आप समय पर लौ को कम या बंद कर सकें। रात को सोने से पहले प्रेशर रेगुलेटर नॉब को ऑफ की स्थिति में घुमाकर बंद करना न भूलें। यदि आपको गैस की गंध आए तो आप क्या करोगे? घबराइए नहीं, इन बातों पर ध्यान दीजिए। प्रेशर रेगुलेटर की नॉब को ऑफ की स्थिति में घुमाकर बंद कर दीजिए। किचन में मौजूद सभी प्रकार की आग को बुझा दीजिए। सभी दरवाजे और खिड़कियां खोल दीजिए। माचिस की तिल्ली न जलाएं तथा कोई भी इलेक्ट्रिक स्विच ऑन या ऑफ न करें। बिजली के स्विच, मोबाइल की टॉर्च अथवा ड्राई सेल टॉर्च ऑन या ऑफ करते समय चिंगारी निकल सकती है, जिससे कि लीक हुई गैस में आग लग जाएगी। प्रेशर रेगुलेटर को निकालकर वाल्व में सेफ्टी कैप लगा दें और तुरंत अपने वितरक को सूचित करें। सिलेंडर डिस्कनेक्ट करने का सुरक्षित तरीका। किचन में मौजूद सभी प्रकार की आग को बुझा दीजिए। सभी बर्नर की नॉब को बंद कर दें। प्रेशर रेगुलेटर नॉब को ऑफ की स्थिति में घुमाकर बंद कर दें। प्रेशर रेगुलेटर के रिंग को ऊपर उठाकर धीरे धीरे घुमाते हुए पूरे रेगुलेटर को ऊपर की ओर खींचें, जिससे ये वाल्व से निकल जाएगा। सिलेंडर के वाल्व पर सेफ्टी कैप लगाकर कैप को तब तक दबाएं जब तक क्लिक की आवाज न आए। सिलेंडर कनेक्ट करने का सुरक्षित तरीका। कैप में लगे नायलॉन धागे को खींचकर रखें एवं कैप को ऊपर की ओर खींचें, इससे कैप निकल जाएगी। सुनिश्चित करें कि वाल्व के अंदर सीलिंग रिंग मौजूद है। अगर ये नहीं है तो इस सिलेंडर को इस्तेमाल न करें और अपने वितरक को सूचित करें। अब प्रेशर रेगुलेटर की नॉब को ऑफ स्थिति में रखकर इसकी रिंग को
ऊपर उठाकर रेगुलेटर को वाल्व के ऊपर रखकर नीचे की ओर धीरे धीरे घुमाते हुए ले जाएं। जब ये पूर्णतः नीचे चला जाए तो स्प्रिंग को छोड़ दें। आपको क्लिक की आवाज आएगी। ध्यान रहे, अगर रेगुलेटर सही तरीके से नहीं लगा हो तो आप इसके नॉब को ऑन नहीं कर पाएंगे। बर्नर जलाने का सुरक्षित तरीका। रेगुलेटर की नॉब को ऑन पोजीशन पर लाएं। थोड़ा रुकें। अगर गैस की गंध आए तो आप क्या करोगे, तो ऊपर बताए गए नियमों का पालन करें। अब माचिस की तिल्ली जलाएं और इसे बर्नर के समीप ले जाएं। दूसरे हाथ से बर्नर की नॉब को ऑन करें, जिससे लौ जलने लगेगी। चूल्हे का कार्य समाप्त हो जाने पर बर्नर की नॉब ऑफ कर दें एवं रेगुलेटर के नॉब को भी ऑफ पोजीशन पर रख दें। बस सुरक्षा के आसान एवं इतने महत्वपूर्ण नियमों का पालन कीजिए और परिवार की सुरक्षा के लिए सक्षम हो जाइए। यहां से आगे बढ़ के अब हम बात करते हैं बचत के बारे में। आप गैस बचाइए, पैसे की बचत अपने आप हो जाएगी। वो ऐसे कि खाना पकाते समय सभी जरूरी चीजें पहले से ही तैयार रखें। अगर पूरा परिवार एक साथ खाना खाए तो उसका मजा ही कुछ और है। इससे गैस की बचत होगी, क्योंकि खाना एक ही बार गर्म करना होता है और वो सेहत के लिए पोषक भी है। गैस बर्नर की दो स्थितियां होती हैं। उनका उपयोग हमें करना है कोई भी द्रव उबालने के बाद नॉब सिम पर रख के पदार्थ गर्म रख सकते हैं। गैस के जोत की ऊंचाई और रंग पर ध्यान दें। अगर जोत नीले रंग की हो तो वो सही है, और अगर जोत पीले रंग की हो तो मैकेनिक से अपने हॉट प्लेट की जांच करवा लीजिए। बर्तन का तल बर्नर के हिसाब से हो। बड़े बर्नर पर बड़ा बर्तन और छोटे बर्नर पर छोटा बर्तन रखिए। गैस पर रखे गए बर्तन के तले से गैस की ज्योति कभी भी बड़ी न हो, इसका ध्यान जरूर रखें। खाना पकाने के लिए आपको जितना पानी जरूरी है उतना ही लीजिए। ज्यादा पानी होने से गैस ज्यादा जलती है। बर्तन को ढकने से खाना जल्दी पकता है। और हाँ, हो सके तो प्रेशर कुकर का इस्तेमाल कीजिए। गैस एक नैसर्गिक संपत्ति है, उसका सही इस्तेमाल कीजिए। धन्यवाद। सड़क पे दिमाग और गाड़ी अक्सर गर्म हो जाते हैं। सर्वोकूल प्लस ट्रिपल एक्शन कूलेंट ये गाड़ी गर्म ना होने दे और आपको भी रखे ठंडा। सर्वोकूल प्लस ठंड रखो फ्रॉम इंडियन ऑयल। Servo, add life. Servo, a range of world-class lubricants from Indian Oil. टीपू सुल्तान की तलवार मेरे पास है। Where are you? तुम्हारी बगल में। जंप नाउ। ओह नो! सुमेरी, आगे लो, आगे लो, बाइक आगे लो। मामू, ईसीजी ठीक नहीं तो समझो स्टोरी फ्लॉप। ये ईसीजी क्या होता है? ईसीजी यानी इंजन, क्लच, गियर और सर्वो 40 यानी ईसीजी स्पेशलिस्ट। ये रखे गाड़ी फिट और स्टोरी सुपर हिट। Servo 40 oils from Indian Oil. Poor guy. What's his name? पुष्पिंदर।
हौले हौले चले रे बल। एक मिनट क्यों? पुष्पिंदर को जाने दो। धीमे धीमे। अपने पुष्पिंदर का लकी खराब है। हैप्पी बर्थडे पुष्पिंदर। Who told you मेरा नाम पुष्पिंदर है? I'm समीर। हमेशा गाड़ी पुश करते दिखोगे तो लोग ऐसे ही नाम देंगे। अपना ECG सही रखो। ECG यानी इंजन, क्लच और गियर, और सर्वो 40 यानी ECG स्पेशलिस्ट। ये गाड़ी रखे टिप टॉप और इज्जत भी। फ्रॉम इंडियन ऑयल। For engine, clutch and gear protection, Servo 40 Synth with advanced synthetic chemistry. It's your license to fly. Servo 40 Synth from Indian Oil. Poor guy. What's his name? पुष्पिंदर। हौले हौले चले रे बल। एक मिनट क्यों? पुष्पिंदर को जाने दो। धीमे धीमे। अपने पुष्पिंदर का लकी खराब है। हैप्पी बर्थडे पुष्पिंदर। Who told you मेरा नाम पुष्पिंदर है? I'm समीर। हमेशा गाड़ी पुश करते दिखोगे तो लोग ऐसे ही नाम देंगे। अपना ECG सही रखो। ECG यानी इंजन, क्लच और गियर, और सर्वो 40 यानी ECG स्पेशलिस्ट। ये गाड़ी रखे टिप टॉप और इज्जत भी। फ्रॉम इंडियन ऑयल। One measure of racing heartbeats. Some wind in the hair. Some sweet, sweet music. And one big smile of pure driving pleasure. And there you have it, a better car. When we created Servo Futura Synth, it was never about making a better engine oil. It was about making cars better. Servo Futura Synth, 100% synthetic engine oil from Indian Oil. अब 40,000 किलोमीटर चले बिना रुके बिना थके। सर्वो प्राइड एक्सएल प्लस, नया हेवी ड्यूटी डीजल इंजन ऑयल जो API CI4+ स्पेसिफिकेशन को पूरा करे। सर्वो प्राइड एक्सएल प्लस, इंडियन ऑयल की पेशकश। ये साइड से थोड़े छोटे कर दे जल्दी। ये वाला सर? क्या है? सर ये साइड से? नहीं। नोज पियर्सिंग यहाँ पे। परफेक्ट हो जाएगा मैम। बिल्कुल दर्द नहीं होगा, पता भी नहीं चलेगा। कुछ ऐसा ही करते हैं आप अपने गियरलेस स्कूटर के साथ। गियरलेस स्कूटर में कोई भी 40 ऑयल नहीं, सिर्फ सर्वो स्कूटोमैटिक 4ST ही डालिए। इसके फ्रिक्शन मॉडिफायर्स इंजन की परफॉर्मेंस बढ़ाए और आपकी राइड स्मूदर बनाए। सर्वो स्कूटोमैटिक 4ST।